Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Rivoli and I'm back here for 10th graders again. And this video is going to be about what all you can do in just these days left. So I know very few days are left. You must be very stressed and nervous, and maybe you have no idea how to revise all of your chapters in all subjects, what to do, which sample question papers to do. If your syllabus is done, then how do you revise all of that, what to do and what not to do. Everything I'm going to tell you all in this video, so make sure you watch till the end and let's get into it. अभी तक आपने जितना भी करा है ना, वो तो मैटर करता ही करता है, बट वॉट मैटर्स द मोस्ट इज़ वॉट यू विल डू नाउ इन दीज डेज लेफ्ट. दिस कैन बी अ गेम चेंजर, सो मेक श्योर यू यूटिलाइज दीज डेज अच्छे से, विद कंसिस्टेंसी, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, सो दैट यू डोंट रिग्रेट आफ्टरवर्ड्स. अब बात आती है कि रिविजन कैसे करें. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपको पैसिव लर्निंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. अगर आपका पूरा सिलेबस हो चुका है, नाउ you do not have to read all those chapters again. This is not revision, okay? This will just be a time waste because you are just reading all of that again, so it is not that effective. What you actually have to do is do क्वेश्चन प्रैक्टिस. लुक, इफ़ योर सिलेबस थोड़े बहुत टॉपिक्स चैप्टर्स अभी रहते हैं तो वो जल्दी से अपना कवर करो एनसीईआरटी पढ़ के, वन शॉट्स देख के. एंड इफ़ योर सिलेबस इज स्टिल 80% 90% डन, देन यू हैव टू मूव टू सैम्पल पेपर्स नाउ. अगर आप सैम्पल पेपर्स करोगे ना, यू विल गेट अ वेरी क्लियर आइडिया वेयर यू स्टैंड राइट नाउ. ठीक है, अभी जैसे कुछ दिन बचे हैं, आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स करोगे एंड you will get an idea how to present my paper, first of all. Second of all, whenever you solve the question papers up, that is actually your revision going on. Okay, now you will just solve the questions. अगर आप से अच्छे से सॉल्व हो रहा है तो दैट चैप्टर्स आर गुड, दैट दोज टॉपिक्स आर गुड. है ना, आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उन टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो. बट इनके हिसाब से कोई टॉपिक नहीं हो पा रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो आपको वो चीज़ पता चल जाएगी कि ओके, दिस आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन. तो फिर आप उस टॉपिक को दोबारा जाकर रिवाइज कर सकते हो, एंड रिवाइज करने के बाद दोबारा से वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो सी कि सॉल्यूशंस में कैसे लिख रखा है, ताकि आपको एटलीस्ट पता चले कि आखिर आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हो. क्योंकि देखो, अगर आप सिर्फ चैप्टर रीड करके रिविजन कर रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ कहाँ हो सकती हैं. बट इफ़ यू अटेम्प्ट द सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, सो यू विल एटलीस्ट नो कि ठीक है, अभी इन टॉपिक्स में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चंस अभी मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे, इसमें इस चीज़ की ज़रूरत है. सो आपको वो एनालिसिस मिलेगा. क्योंकि अगर आप बस रीड करते रहेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे सब आ गया, मैंने सब पढ़ लिया, मैंने सब रिवाइज कर लिया. बट व्हेन यू एक्चुअली अटेम्प्ट क्वेश्चंस, यू विल गेट एन आइडिया हाउ मच यू एक्चुअली नो, हाउ मच यू आर एक्चुअली एबल टू सॉल्व. फॉर मैथ्स एंड साइंस, they are very important. And this is actually your revision strategy. When you solve the question papers, you will do some mistakes, then you analyze those mistakes, you revise that topic again, then you attempt those questions again, see the solutions of the sample question papers ki इस type से answer कर रखा है. And that is how you will be able to revise your weak topics and improve your already done topics. If you still haven't purchased any sample question paper, I will suggest you these Oswaal sample question papers, especially for maths and science. Of course, they have for all subjects, but you know that maths and science are they need more practice, so you should really solve sample question papers. And I will suggest you these Oswaal sample question papers. I will just show you what all you get inside these books. So let me show you the maths sample paper first. So this is the cover page. It includes most likely practice papers, and it has question based on real world scenarios, critical thinking and practical understanding. Basically, it contains application based questions. It contains high scoring cheat sheet with marking scheme and highly probable questions. Okay, now this is the design of the sample papers issued by cbse itself. This is the contents. As you can see, first of all, it contains mind maps. After that, it has on tips notes, which will be really helpful if you want to just have a quick revision. Then it has sample question papers which are solved. There are 5 sample papers. Okay, then you have self-assessment papers 5, then you have practice papers 5, and then you have solutions of the sample question papers. Then you have high scoring cheat sheet, and then highly probable questions. You can see this is the maths sample question paper, so you can see the design of the question paper. This is all which it contains, what type of questions are there, remembering, understanding, application based, analyzing, evaluating, so all of that in 80 marks. Okay, and then internal assessment is just जो आपके स्कूल में होता है. This is a trend analysis. You can see
these are the analysis of all the chapters of maths, like हर concept से कौन से ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आया है. लाइक सपोज रियल नंबर से प्राइम फैक्टराइजेशन पे 2025 में MCQ आया था, असर्शन रीजनिंग आया था, और 24 में MCQ आया था, एक शॉर्ट आंसर आया था. तो ऐसे करके आपको पूरे सारे चैप्टर्स के ट्रेंड एनालिसिस मिल जाएंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस कौन से चैप्टर्स से ज़्यादा MCQs आते हैं, या फिर ज़्यादा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं, या फिर शॉर्ट आते हैं, या केस स्टडी आता है. तो लाइक यू कैन सी हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में पिछली बार हमारे टाइम पे ये आया था केस बेस्ड, इस पे जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला है. आई स्टिल रिमेंबर इट. सो हाँ, इससे आप अपना आइडिया एक लगा सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हर चैप्टर से. सो हियर इज़ द एक्चुअल थिंग वेयर इट स्टार्ट्स. सो दिस इज़ हैंड रिटन टॉपर्स आंसर, ओके, ऑफ लास्ट ईयर. So it has all these questions solved. Like you can see all the handwritten answers of topper. You can really get an idea how to present and how to solve the questions. The whole question is solved. You can get a really good idea by looking at these answers and solving them yourself. Chapter wise mind maps start from here. You can take a look from this and just revise quickly. Every chapter's mind map is there for you. Then you have these on tips notes of every chapter, like real numbers, polynomials, and all of the chapters, where you just have all the topics covered in those chapters in short, ताकि आप अच्छे से like revise कर पाओ. Like here are the important formulas. Now the sample question paper starts here. That was issued by cbse itself. Now this is the sample question paper. You can solve them, and here are the solutions, detailed solutions, so you can get an idea how you can solve the questions. So now it just has these sample question papers like this, and these are the practice papers. Like this is all you need for your practice. These are all the solutions. It contains everything. You also have these small tips, like some commonly made errors, concept and answering tips for you, so you can just go through it. All the solutions are here. This is the best part. These are highly probable questions जो आपके बोर्ड में आने की काफ़ी ज़्यादा chances हैं. Of every chapter there are mentioned all the questions which can come in your board exams. This was the maths sample paper. I will also just quickly show you the science one. It has the same content, like the design of the sample paper issued by cbse. It also contains the same things, mind maps, notes, question papers. Also has the trend analysis of all the chapters, and it is handwritten by the topper, so you can just look at the answers and get an idea how all the things are done. It will really help you knowing how to do answer writing. Then you have the mind maps of all the chapters. Like look how conceptual and crisp these are. Then you have the on tips notes of every chapter. You can just go through this really quick to have a quick revision, all the important diagrams of the chapters. So I think this is really nice. Then the sample question paper start. You can just solve them, and then you have the answers on the last few pages. It contains all the details of the answer, how you should present your answer, and the same thing, commonly made errors, answer tips. Last page you will have the most probable board exam questions. You can go on and purchase them from the link in my description and the pinned comment. So I just gave you an overview what all you will get inside the book, and I think it's really nice for these days. I think that is pretty good for a revision and practice, so you can go for that. I will give you the link in the description and the pinned comment, so you can go and purchase it from there. And make sure you purchase the latest for 2026 exam. मैंने खुद देखा है, चाहे साइंस की बात हो या मैथ्स की बात हो, I think they will really help you in your preparation. It has all you need for now, because of just a few days are left, and you just need something to guide you, and so that you can practice and all of that. So I think this is really a good choice, so you can surely purchase them. And yeah, I personally really liked what all you get inside the book, so you can get them. Link is in the description and the pinned comment. The next point is, if you still haven't made any formula sheet for maths and reactions sheet for science, please make them, because it will really help you in the last minute revision when your board is like the next day. So you can find all the formulas in one sheet, all the reactions of chemistry in one sheet, so it will be really helpful, trust me. So if you still haven't made those, go and make them right now. And
राइट नाउ डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स और योर फ्रेंड्स, लाइक उनका तो इतना हो गया, मैं भी यहीं पे हूँ, उन्होंने इतने सारे सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिए, मैंने अभी तक इतने से ही करे हैं या फिर करे नहीं है. सो look, everyone has their own pace. Okay, you still can do very well if you start now, but the thing is you have to start now. Like seriously, keep all your distractions away. अगर तुम्हारा फ़ोन तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है तो तुम पढ़ने बैठोगे, अपने मम्मी पापा को फ़ोन दे दो कि जब तक मैं रूम से बाहर नहीं आती पढ़ के, जस्ट कीप माई फ़ोन एंड देन यू विल नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड, यू नो. अगर तुम फ़ोन से ही पढ़ रहे हो तो फिर डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करो, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई वाली चीज़ देखो, जो यूट्यूब पे लेक्चर्स वगैरह, जो भी ऐप तुम्हारे पास है, जो भी बैच तुमने लिखा है. अगर तुम्हें फ़ोन से ही पढ़ना है तो फिर डू दिस, डू नॉट डिस्टर्ब मोड. कोई भी नोटिफिकेशन, यू डू नॉट हैव टू केयर अबाउट इट एनी मोर, बिकॉज दीज आर जस्ट अ फ्यू डेज लेफ्ट एंड you have to utilize them in a really good way so that you don't regret afterwards. Like trust me, these days even if you think कि बहुत कम दिन बचे, अब क्या ही हो पाएगा, trust me बहुत कुछ हो जाएगा, many things will change. So just get up and study now consistently and with focus, because this is the last chance now. This will be a game changer and you will do good. ऑल्सो इफ़ यू आर टॉकिंग टू एनी ऑफ अ फ्रेंड और एनी वन, एनी क्लासमेट, और वो भी कह रहे कि हाँ भाई मेरा भी नहीं हुआ, मेरा भी बहुत सारा बच रहा है, मैंने भी अभी तक कुछ सॉल्व नहीं करा, सो डू नॉट रियली ट्रस्ट देम. और अगर इवन इफ़ दे आर लाइक टेलिंग द ट्रूथ, तब भी ये सब बातें करने में अभी अपना टाइम वेस्ट मत करो. जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ राइट नाउ. ओके, सो दीज वर सम ऑफ द टिप्स विच यू नीड टू फॉलो टू स्कोर गुड इन जस्ट these days left, and make sure you use your time efficiently, and all the very best for your boards. And do subscribe if you haven't yet. Let's meet in the next video. Till then, take care, keep studying, and